लोसाई के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, प्लस आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन नंबर 1। आपको बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। क्या बनाए जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या फिर आपको बोल देगा कि आप लोसाई ऑफ लाइन ए एंड बी बनाए। क्या बोल देगा कि आप क्या बनाए? लोसाई ऑफ द लाइन ए एंड बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर लोसाई ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ? एनी लाइन, लेट्स से इफ द लाइन is of 10 centimeter, then it will be divided in two equal parts of 5 centimeter each. But since we are working on construction, that means arc will be created. Now, how are you going to create an arc? Let's say this is your A, this is your B. Let's say this is a 10 centimeter line. It's a 10 centimeter line. So there are a few steps that you need to follow. Your step number 1, you need to pick your compass. Pick your compass and put the compass pointed on A. Put your compass pointed on A. Compass should be opened more than half the line. That means कि आप उसको 5.5 भी कर सकते हो, 5.1 भी कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि भाई 7.5 पे ले जाओ। मैं बोलता हूँ 7 पे ले जाओ। फुल लाइन से छोटा, आधे से ज्यादा। ठीक है, कंपास को इतना खोलना है कि आधे से ज्यादा हो लाइन के, और फुल लाइन से आपका कम हो, ताकि आपके पास आर्क आसानी से बन जाए। ठीक है, तो पिक योर कंपास, पुट द कंपास ऑन पॉइंटेड ए, कंपास शुड बी ओपन मोर देन हाफ द line. Then make arc above and below line of A and B, which means, let's say, let's just do it this way, that this is your point A. You'll put the compass here, right? Pointed compass here, and then you'll create an arc. Your arc will be created up and your arc will be created down. Your arc will be created up and your arc will be created down with the same compass. Similarly, then again pick your compass and put pointed on B, pointed on B, and make arc with same opening of compass. With same opening of compass, remember that opening will not change. Same opening of
compass. Your compass opening from A will be same as compass opening from B, so that the arc should be created at the equal distance from A and B, which means when you keep your compass at B, you'll be creating an arc here and here. So if you see, both the arc will intersect at points. And when the arc will intersect at points, so that intersection will basically become, this intersection will basically become the line where the perpendicular line will cross. Remember that perpendicular line makes up what, 90 degree. But when you're creating this perpendicular line, these both sides will be of 5 centimeter each. Now, generally, most of the students say, sir, when we know that this is the half, just create a line at half. But remember, it's just the topic related to construction. So the showing of arcs are very important through the compass. Now, using the same methodology, the question is asked in such a manner that in the same question it can be said, shade region closer to A than B. Now, what is the purpose of this bisector line? भाई bisector line का purpose ये होता है कि जो मेरे पास end के point है उसका designated area बता दे जो उसके करीब है, उसका designated area बता दे जो इसके करीब है. अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एरिया है ये क्लोजर टू ए है देन बी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो 5 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5.01, पर यहां से लेके ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4.9, 5.1 होगा अगर ये, तो ये क्या हो जाएगा 4.9. सिमिलरली अगर क्लोजर टू बी देन टू ए चाहिए तो क्लोजर टू बी ये वाला हो गया साइड, राइट. तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा 4.9, और यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा 5.1. तो क्वेश्चन ये बोल सकता है शेड द रीजन क्लोजर टू ए देन टू बी. तो मुझे ये पता है भाई, ठीक है जी, क्लोजर टू ए देन टू बी तो ये वाला एरिया है. अगर वो बोलता क्लोजर टू बी देन टू ए है तो मैं सुकून से ये वाला एरिया शेड कर देता. So you need to understand what is written when your perpendicular bisector line is drawn. So that means the question will say closer to A then to closer to B. तो उसके हिसाब से आप क्या बना दोगे, लाइन बना दोगे. Have I made myself very clear? Good. तो ये क्या हो जाता है perpendicular bisector का आपके पास लोकस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे लोसा है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. तो नाउ लेट्स से एंगल अब बनाना हो तो देखें, पॉइंट ये है कि जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता होगा ना तो ये काम नहीं हो पाएगा. तो प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, या लेट्स से परपेंडिकुलर नहीं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, या फिर वो बोल सकता है बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी एंड डी सी. वो बोल सकता है लोसाई ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी. तो ये कुछ वर्ड जो है ना वो क्या कर देता है. अच्छा, एक और वर्ड भी यूज करता है यहां पे भी, अगर मैं इसको बोलूं इक्विडिस्टेंट. कौन सा वर्ड यूज कर देता है, इक्विडिस्टेंट ऑफ द लाइन ए बी. तो आप लोसाई का की जगह पे वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, इक्वी डिस्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी. अब इन दोनों में पहले और दूसरे में फर्क क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स थे,
यहाँ पे क्या थे, दो अलग अलग पॉइंट्स, पर यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग लाइंस गिवन है। तो लेट्स से कि भाई मैं बनाता हूं ए बी, ये आ गया बी और ये आ गया ए, और यहां से एक एंगल जा रहा है किसकी तरफ, सी की तरफ। तो मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है, ये ए बी की लाइन है और ये क्या है, बी सी की लाइन। अगर ये 80 का एंगल है, कितने का एंगल है, 80 का एंगल, तो इसको मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा 40-40 के एंगल में। पर सवाल ये पैदा होता है कि मुझे डायरेक्टली तो नहीं बताना, मुझे क्या बताना होगा, मुझे बताना होगा थ्रू द कंस्ट्रक्शन मेथड। तो व्हाट वी गोना डू इज, इसमें भी हम लिखेंगे पूरा ना, ताकि हमें समझ आ जाए, असल चीज तो समझ आना है। तो when two line equidistant is there, two line equidistant, it is known as angle bisector. This is known as what, angle bisector, bisector of angle B or angle bisector. It is known as what, angle bisector. Now your common point of both lines will be bisected. Your common point, now what is common, A, B and B, C, B is common. What is common? B is common. Put compass on common point and make an arc crossing line AB and BC. Smaller distance. This can be any distance. This can be any. Open your compass according to you, but a smaller range. So what we're gonna do is, let's just say, this is your ABC, right? So what we're gonna do is, let's say that this will be your compass point, and what you're gonna do is you're gonna create an arc. This can be on any distance, no matter what. You can create it from here or you can create it from here. Now let's say this is your point 1, this is your point 2. I'm just naming it so that it will get easier for me to write it down. So there are 2 points, point 1 and point 2. So what we did was, we made sure that we put compass on common part and make an arc crossing the line AB and BC. Is the line crossing AB? Is the line crossing BC? Now what happens is, put compass on point 1 and make arc in mid of angle. Any distance. Again, the distance can be changed here. The distance can be changed here. Similarly, then put compass on point 2 and make arc. So when you're creating another arc, it should be same distance as point 1. It should be same distance as point 1. So what you're going to do is, point 1, you create an arc. Put the compass on point 1, you create an arc. Put the compass on, and what you do is you create an arc here. This distance will be same. So what do we have it in the end? So this is your line, point 1, point 2, right?
We create an arc. Now, what we do is we draw the line and we intersect. This line can be created from this point as well. This line can be created from the point as well. So now, if the angle was of 80 degree, it can easily bisect it into what? 40, 40. It can easily bisect from what? 40 and 40. So this is what? This is your equidistant of what? Two different line, which is known as your angle bisector. This is equidistant of two different line, which is your angle bisector. So in this part, the further thing that can be asked is the shading part. It can say closer to BC than AC or AB, closer to BC than AB. Now this perpendicular bisector line is basically created to create the half of the lines closer to B and B, AB and closer to BC. So if the line is closer to BC, so this is your line BC and this is your perpendicular line, so that means the shaded part should be here. It should be within the lines, definitely. So the shaded part should be here. If it said that, okay, it's closer to AB than BC, then the shaded part should have been right here. So eventually you will be told to find out the sector shaded part or where does that region lie when both of the things can be matched. Like for suppose, let's just say that let's just make 1 and 2 combine here. Let's just combine 1 and 2. For a bit of example, right? Because we want to understand what the loci is all about. So what we had was, we had line B and we had line A. This is A, B, right? B and C. So we know that we have line A, B and C, and knowing the fact that we made sure that we had the arc here and this was the line. Now, if the question said that in part 1, we also had the perpendicular bisector of AB, which was like this, right? Now, there are two options that you need to understand, right? What does each part represents? For this part represents closer to A than to B. For what equidistance of AB? And this part also represents closer to BC than AB. This part represents closer to A than to B, because what you need to understand is that if in the question it says closer to A than to B, obviously this entire thing will be shaded, right? But the second part says what? Closer to BC. So BC is this line. So if this is closer to this, so that means this should be, the shaded part should be above this line and on the right of this line. So this thing will be shaded. Yes, you will be getting them together to shade. Now, similarly, there can be a possibility. Now, for this particular point, this is closer to A than to B. But on the second thing, this is closer to AB than BC. See, just to change the closeness from BC, the shaded region changed. Closeness to AB has been changed now, right? It's more closer. AB के ज़्यादा करीब आ गया.
अब ए बी के ज्यादा करीब आ गया तो बी सी से क्या हो गया, दूर हो गया। तो होगा क्या कि इस वाली लाइन के नीचे और इस वाली लाइन के राइट पे, क्योंकि इसका तो क्लोजर टू ए टू बी तो है ना, तो ए तो ये है, इसके क्लोजर होगा, और क्लोजर टू ए बी देन बी सी का मतलब इस लाइन के करीब होगा, तो इस लाइन के नीचे होना चाहिए। तो हमेशा हम जो भी लाइन होगी उसके हम नीचे नोट करेंगे। तो अब सिमिलरली देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर एग्जाम्पल के उस पर आपको लेके चलूं। नाउ रिमेंबर दिस, नाउ लेट्स जस्ट वर्क ऑन दिस एज वेल। ये क्या बोल रहा है, अब इस वाले के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा क्लोजर टू बी देन ए। ये वाला शेड कहाँ हो जाएगा, क्लोजर टू बी देन टू ए। और ये हो जाएगा क्लोजर टू बी सी देन ए बी। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोजर टू बी देन ए एंड क्लोजर टू ए बी देन बी सी। तो आपके पास ये पूरी कंडीशन हो गई। इसमें अभी तक हमने क्या डाला है, सिर्फ 1 और 2 डाला है। 1 क्या था, इक्विडिस्टेंट ऑफ लाइन ए बी। 2 क्या था, इक्विडिस्टेंट ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी। तो मैंने सिर्फ इसमें ए और 1 और 2 डाला है। ओके जी। थर्ड, it says equidistant, or let's just change the proper word. It says loci from a point, any point, it can be A, it can be B, 3 centimeter from A. It says 3 centimeter from A, or let's say 3 centimeter from B. Now, what we'll do is, what does 3 centimeter from B means? Now, let's say this is line A and B. We knew that this was a perpendicular bisector with different arcs, right? We know that it was a 10 centimeter line, but when we broke, this becomes 5 centimeter and this becomes 5 centimeter as well. But what does this 3 centimeter from B means? 3 centimeter from B means that from the point B, it should be 3 centimeter, because does it say anything related to east, west, north, south? No. So when it directly says 3 centimeter from B, so 3 centimeter on the right hand side, 3 centimeter above, 3 centimeter on the left, and 3 centimeter below. So that means a circle will be created with the radius of 3 centimeter. A circle will be created with the radius of what? 3 centimeter, so that you get a locus from the point, that means 3 centimeter from what? B. You get what? 3 centimeter from what? B, which means if I just want to draw this from this point, if we create a circle, if we create a circle, this circle will be of what? This circle will be of 3 centimeter. The circle will be of 3 centimeter from the point B. Now, noting the fact that as we know that this is your circle. Now, it can be either in the east side, it can be in the north side, it can be on the west side, it can be on the whatever side, because it's a circle, it can go 3 centimeter anywhere from B. But if in generalized question, let's just react. Now, let's just include this third part in this as well. 3 centimeter from what? B. So, let's say this is your point B.
This is your point B, and we are creating a 3 centimeter line. So this is point B, and we create a circle. Let's say the circle is of what? 3 centimeter. 3 centimeter on the right, 3 centimeter on the left, 3 centimeter to the top, and 3 centimeter to the bottom. Now, in the question, what the examiner does is, the question says locus from the point, draw inside the diagram. Draw inside the diagram. The diagram must be given to you, and they want the 3 centimeter inside. So at that particular time, you will only be drawing 3 centimeter, because this from here till this point, if you just note from here till here, this is also 3 centimeter. This is also what? 3 centimeter, right? So you will only draw this line, 3 centimeter, and the sector will be made of what? 3 centimeter inside the diagram. But you will not be required to draw the entire what? Entire circle, because the question, the examiner would say 3 centimeter from point B inside the diagram. So only this will be your arc of what? 3 centimeter. Now, how will this help? How will this help? Now you already know that because of this circle, there can be two options. There can be two options. The question can say that it is before 3 centimeter, it is after 3 centimeter. Within 3 centimeter, after 3 centimeter. Within the range of 3 centimeter, after 3 centimeter. You need to understand कि वो ये बोल सकता है भाई पहले या बाद में, राइट? क्या हो सकता है? पहले या बाद में. अगर पहले होगा तो फिर कहाँ शेड होगा भाई? वो अंदर की तरफ शेड होगा. और अगर बाहर होगा तो ये बाहर की तरफ शेड होगा पूरा. पर प्रॉब्लम ये है कि ये अकेला तो नहीं होगा ना सर्कल. बेसिकली अगर ये होगा तो ये सबके साथ आएगा, सबके साथ आएगा. अब अगर वो बोलता है कि भाई विद इन, यहां पे डाल देता हूं इस साइड पे, विद इन 3 सेंटीमीटर, और इन ये दोनों के साथ है, इन दोनों के साथ है, और विद इन 3 सेंटीमीटर है. क्या है? विद इन 3 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट आपका शेड हो जाएगा. सिर्फ इतना शेड होगा, क्योंकि विद इन का क्या मतलब? अच्छा जी, ये लाइन क्लोजर टू बीसी है, बीसी एंड ए बी भी है. ये क्या है? क्लोजर टू बी और देन ए बी है. पर उसने बोल दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया विद इन 3 सेंटीमीटर. अगर यही यहीं पे बोलता आफ्टर 3 सेंटीमीटर इन दोनों के साथ, तो ये पूरा शेड हो जाता. क्या शेड हो जाता जी? आप पूरा इसको शेड कर देते. क्योंकि ये बाकी दो को तो प्रूफ कर रहा है. क्या कर रहा है? बाकी दो को प्रूफ कर रहा है. ये क्या हो गया? क्लोजर टू बी देन टू ए बी है, देन टू ए, क्लोजर टू बी सी देन ए बी, और आफ्टर 3 सेंटीमीटर भी है. तो सिर्फ कौन सा शेड होगा? ये कलरफुल वाला. ये ग्रीन वाला फिर शेड नहीं होगा. ठीक है जी. अब अगर वो इसके साथ बोलेगा तो इसके साथ तो सिर्फ बोलेगा आफ्टर 3 सेंटीमीटर, राइट? इसके साथ क्या बोलेगा? आफ्टर 3 सेंटीमीटर. और फिर ये भी नोट कर रहा है, तो सिर्फ आपका ये वाला पार्ट शेड होगा. दैट मीन इसमें तो वही वाला पार्ट शेड होगा जो ओरिजिनली इसका था. उसमें फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई होप दैट इट इज क्लियर अप टिल नाउ. सो विच मीन्स कि अगर मेरे पास क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, अब नीचे भी ऐसे ही आ सकता है. विद इन 3 सेंटीमीटर होगा तो ये आपका ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा.
आफ्टर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। तो इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन की क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है, करवाना क्या चाहता है। तो दिस वाज व्हाट लोकस पॉइंट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम व्हाट बी, इट कैन बी फ्रॉम ए, इट कैन बी फ्रॉम सी। लास्ट जो आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, वो आता है स्ट्रेट लाइन। वो जनरली ज्यादातर आपकी स्केल से बनता है 90 डिग्री एंगल के साथ। वो क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल के साथ बनता है। लेट्स से फोर्थ, राइट, फोर्थ क्या बोलेगा, लाइन ए बी इज देयर of 10 centimeter. Now you need to understand this. Line AB is there of what? 10 centimeter. It will say parallel line to AB above A. Above AB. Parallel line to AB above AB. यहाँ पे वर्डिंग को जो और देगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई सेम उस पे हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन पे बना, बट वो पैरेलल का डिस्टेंस बोल देगा एट डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 6 सेंटीमीटर। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि वो ए से भी 6 सेंटीमीटर होगा, वो बी से भी 6 सेंटीमीटर होगा, वो यहां से भी 6 सेंटीमीटर, हर जगह से क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन बिल्कुल कहाँ होगा 90 डिग्री के टॉप पे। तो लेट्स सी यहाँ पे आगे 3 पॉइंट बना लें या 2 पॉइंट बना लें, वो आपके ऊपर है। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये क्या लाइन है, पैरेलल टू ए बी, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है 6 सेंटीमीटर का। डी रख के, ए पे डी रखें और 90 डिग्री का एंगल मार्क कर दें ऊपर, बी पे रखें और 90 डिग्री का एंगल मार्क कर दें, 2 पॉइंट आ जाएंगे। फिर उस एंगल की डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें, जहां पे लाइन एंड हो रही होंगी दोनों की, वो आपकी क्या बन जाएंगी, वो आपकी 6 सेंटीमीटर की पैरेलल। अब जरूरी नहीं है अब वो बिलो भी हो सकता है। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब ज्यादातर आपके पास इसमें मैपिंग के सवाल आते हैं, मैपिंग के सवाल आते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 10 मिलीमीटर। तो बहुत सारी जगहों पे आपको ये क्या करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है। कभी कभी आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर इज बेसिकली 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kilometer square will be 1,000 meter square, 1 centimeter square will be 100 millimeter square. So there might be a possibilities of what, squaring as well with the help of what, millimeter focus. So this was more about loci point 1, 2, 3 and 4.